Hey guys, hi, good evening, and welcome to the class. I hope all of you are really good and really well. And if that is so, quickly give a 5 in my chat box so that we know all is well and we can quickly begin. Yes. Ayo. So, can you see me? Can you hear me better? I can't see you, I can't hear you, only I can read what you write. But I think you're trying to make a point that, so we can see you, we can hear you, so you are good to go. Okay. Is that so? Where is the remaining bacha party? Okay, so we are going to start NTSC Menti Marathon, right? So quickly go ahead and log on to Menti and then we'll quickly begin. उसके पहले introductory slides. We need to go over through them. So tracker पे आपको material मिल जाएगा और material already upload होने start हो चुके हैं. Link can also be found in the tracker itself. If you have any doubts, you know where to reach me. Sona Singh Unacademy. Um, you already know about me. Let's not repeat that. What's Bugs Bounty? If you find inappropriate content or behavior, let us know. How do you let us know? By filling the form that's down in the description and we'll take care of it. Obviously, we'll reward you for doing that. Now, finally, what is Plus? What's Iconic? They are amazing subscriptions. जैसे आपको Unacademy के paid platform का access मिल जाता है. That means you can go for batch courses. You can जहाँ पे आपको test होता है, study material मिलता है. Everything is available even in recorded format just in case you miss one of your classes. कैसे लेना है? सबसे पहले कैटेगरी चूज करना. IIT-JEE नीट फाउंडेशन. क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका बोर्ड और फाउंडेशन दोनों का लंबा महीना चूज करना. क्यों? इससे पर मंथ प्राइस आपकी घट जाती है. और फिर ऐड करना टीचर का कोड. मेरा क्या है? Sona05. ये कोड ऐड करते ही मिलेगा 10% डिस्काउंट. आइकॉनिक प्लस का बड़ा भाई है. प्लस के सारे गुण है उसमें. उसके अलावा देयर इज लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट कनेक्ट सेशंस भी होते हैं और आपकी स्टडी प्लानिंग में भी काफी हेल्प की जाती है. तरीका वही है, कैटेगरी, महीना एंड कोड, एंड ये 10% डिस्काउंट. इफ यू वांट टू फर्स्ट चेक इट आउट, पहले जाओ और स्पेशल क्लासेस अटेंड कर ले. वहां पे रियल टाइम होता है, बिल्कुल प्लस के जैसा ही. आस्क क्वेश्चंस, यू हैव पोल्स, यू हैव लीडर बोर्ड, ये सारी फैसिलिटीज उधर मिलती है आपको. ऑल्सो इससे बढ़िया मौका शायद there won't be. So you have Unacademy Prodigy. What is Unacademy Prodigy? You get a 20 lakh college grant. कैसे? आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में there would be exams. You have to compete. Enrollment is free. All you need to do is use the code SONA05. अपना कैटेगरी चूज करो, अपना डेट चूज करो, अपना टाइम चूज करो. And so is there a class at 6:45? Yes, beta, that's a special class at 6:45. Okay, and for every test you win exciting rewards. And also 29th and 13th February ko you win a 20 lakh ka college grant. There are different prizes for different rank holders, and there are different kind of scholarship slabs as well, depending upon your performance. Also, for existing Plus subscribers, if you want to extend your Plus or Iconic subscription, by 12 months or above, you get an extra 3 or 6 months subscription respectively. ठीक है, तो इन पे काफी अमेजिंग कोर्सेस आते हैं. जैसे अभी 2 कोर्स है, एक फाउंडेशन 10th के लिए प्रीमियम और फाउंडेशन 9th के लिए गोल्डन. तो गाइज, इन सभी अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल कीजिए आप जितना कर सकते हैं, राइट? सो यूज दीज अपॉर्चुनिटीज एंड मेक श्योर दैट यू सक्सीड टू द बेस्ट. ठीक है, गुड afternoon Kritikan and Rishabh. Okay, are we ready for questions now? क्या हम questions के लिए तैयार हैं? So today we have NTSE महाराष्ट्र के 16-17 से स्टार्ट करेंगे. 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21. कोशिश करेंगे जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना करने का. टारगेट रहेगा एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, एटलीस्ट. ठीक है, ओके. सो timing is different for different types of questions. Let me become Chota. So this is me going for Chota Hanuman. Chota Hanuman goes here, and as soon as Chota Hanuman goes here, the code. Yes, the code. Okay, go ahead. So that's the code. It's available quickly. Fatafat join kar lo. 3409
1725. Swayam, the code is on the screen. Swayam, code is on the screen. 3409 1725. Whatever, everyone. It's 3:36. The maximum amount of time this class can run is for 40 or 450 maximum, क्योंकि 5 बजे से दूसरी क्लास है. उस समय तक कोशिश करेंगे फटाफट जितने क्वेश्चंस हो सकता है सॉल्व करने के. आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी हियर. सर डिड यू डू तमिलनाडु PYQs? तमिलनाडु का एक और सेशन आएगा. We covered them somewhere else, but there would be one more session, and I don't know why are people supposed to not call me, are calling me. Give me one quick moment. Okay, I can't disappear just like this, right? Okay, just give me one quick moment. I need to take care of this. Yes. Okay, I am back on track. Yes, sorry. Okay, तो सभी लोग आ चुके हैं. Let's begin. Enter. First question. So I will be looking at your comments. If you have any questions, we'll cover that as well. कुछ questions थोड़े छोटे दिखेंगे. Sorry, screenshots. That's why. Which of the following harmful products is not produced in the biochemical reaction? Biochemical reactions में कौन सा product produce नहीं होता? First question. Come on, guys. Everyone. Yes, yes, yes. Okay, lymph has got no business in being produced as a result of a biochemical reaction. Lymph is a basic fluid that is generated out of what comes the filtered प्लाज्मा. प्लाज्मा आपका फिल्टर्ड होके जो बाहर निकल रहा है ब्लड कैपिलरी से उधर से आ रहा है. सो lymph is not a chemical substance, right? It's a fluid which has chemical substances in it. Rest all of these are excretory substances. lymph कोई substance नहीं है और lymph एक excretory substance तो बिल्कुल भी नहीं है. So question number 2 है. हाँ, ओके गाइज, देयर इज नो स्पीड वाला थिंग. मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जल्दी आंसर करने से आपको ज्यादा नंबर मिलेगा. प्लीज हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? यू डोंट नीड टू डू हड़बड़ी एंड गड़बड़ी बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू आंसर क्विकली यू गेट मोर मार्क्स और समथिंग लाइक दैट. ठीक है? ओके, वेर इज दैट? नो. Shouldn't this be supposed to be fungi? Okay. Take a second. So I gather there's still time. Okay. Now, very beautiful. So you have Venus flytrap and Drosera. ये दोनों ही आपके key clues थे. Venus flytrap आपको पता है जैसे हुआ it will close itself. Now Drosera, that is also known as a sundews, if you see, उनके जो पत्ते होते हैं ना उनमें ऐसे tentacles वैसे निकले होते हैं. So these tentacles are, the moment they are triggered, they are quickly activated and insect गया आराम से, right? So that was the key clues that you need to understand. Okay, इससे easy question आपके लिए नहीं आ सकता. You won't find a question which is easier than this. ठीक है? Hi Anshika, good evening beta. Come on. Go ahead, go ahead. Beautiful. Ingestion, digestion, absorption, assimilation, ingestion, sorry, egestion or what? So Menti code. But I'll show you the Menti code just after this. अभी बीच में क्या रहेगा ना तो पूरा ये गायब हो जाएगा. So I'll show you the code just after this. Okay.
ब्यूटिफुल. सो वी नो सबसे पहले खाना अंदर आएगा. वंस द खाना इज अंदर इट नीड्स टू बी डाइजेस्टेड. खाना डाइजेस्ट जैसे हो गया उसके बाद इट्स ऑलरेडी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स. देन यू नीड टू अब्सॉर्ब इट. फिर उसका जो भी आप काम है वो काम करोगे. और जो भी बेकाम का है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए, ज्यादा खा लिया था, और वॉट एवर इज द प्रॉब्लम, विल सिंपली थ्रो इट आउट. राइट. सो ingestion, digestion, absorption, assimilation, egestion. Moving on to the next question, please. Oh, first leaderboard of the century. वो एक था स्टूडेंट. ओ नाइस वन. हाँ, कौन है ये एक था स्टूडेंट? ओके, यू कांट सी मी. आई कैन सी यू. बिलीव मी, आई कैन सी यू. ओके. So I have Swayam, Nidesh, एक था स्टूडेंट, Ritika, you can't see me, Kritika and Amir. I am very sure ये you can't see me is अजीत. पक्का अजीत होगा. ओके. चलो, क्वेश्चन नंबर 4. क्विकली, फटाफट. Which environmental information is picked in the neuron? Environmental information कहाँ पे आएगा न्यूरॉन से? Yes, yes, come on. So really you can see me? No, but I can't see any of you. So this is a one sided dialogue thing, right? So I can't see any of you, but yeah. Go ahead, please. Okay, beautiful. So आपको ये finger like structures दिख रहे हैं, and the finger like structures very easily are your dendrites. Dendrites के membranes, they are sensitive. They might have receptors, they might have channels. Something could trigger those channels to open, or just change their permeability. Something would come inside and the dendrite would be stimulated. ये stimulation अगर काफी होगा तो एक्सॉन पे चेंजेस शुरू हो जाएंगे, और ये चेंजेस आगे तक जाएंगे और न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज कराएंगे. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी ट्विस्ट और टर्न नहीं था इसमें. ओके. प्लांट हार्मोन, ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स और सीड्स की बात की. सर कैन यू सजेस्ट सम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टू रिवाइज बिफोर एनटीएससी? लाइफ प्रोसेसेस ऑलवेज. जेनेटिक्स, क्योंकि उसमें लोग गलती करते हैं, हालांकि सवाल एक ही आएगा. और थोड़ा छोटा क्वेश्चन लिख देते बेटा ना, ये पीपीटी ना छोटी हो जाती है. पीपीटी छोटी हो जाती है, बट अगर आप मोबाइल में हो आपको दिखेगा. मतलब आई नो यूट्यूब पे छोटा दिखता है, उधर थोड़ा दिख जाता है. सम्यक, हाय, व्हाट्स अप सर? कोड, बेटा कोड वुड बी अवेलेबल आफ्टर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या था भाई? ओके, द करेक्ट आंसर इज जिब्रेलिन. जैसे भी हम फ्रूट्स और जैसे हम राइपनिंग की बात करें, थैंक यू सो मच अंशिका. जैसे ही हम राइपनिंग की बात करें, सबसे पहले आएगा आपका इथाइलिन. राइट. सर डिड यू नोटिस द लैंग्वेज? आई नोटिस्ड एंड सॉर्ट ऑफ डिसनोटिस्ड द लैंग्वेज. अजीत, क्या करें, इट्स ओके, है ना. समटाइम्स यू हैव टू ओवरलुक. क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आप इथाइलिन में पढ़ते हो क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स. व्हाट इज क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स? क्लाइमैक्टरिक फ्रूट्स मतलब ऐसे फ्रूट्स जिसमें इथाइलिन ऑटो कैटालिटिक है. ऑटो कैटालिटिक का क्या मतलब? एक बार इथाइलिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो वो इथाइलिन प्रोडक्शन प्लांट को बोलता है कि भाई और इथाइलिन प्रोड्यूस करो. पॉजिटिव फीडबैक. राइट. और इसीलिए मम्मी आम के को ढक देती है. जब आप जिद करते हो कि मम्मी मम्मी मुझे आज ही आम खाना है, तो मम्मी इज लाइक रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ठंड रख. तो मम्मी इज लाइक व्हाट? मम्मी कवर्स द आर्म. व्हाई डज शी कवर्स द आर्म? बिकॉज शी नोस कि भाई जो इथाइलिन है वो निकलेगा, और इथाइलिन विल बूस्ट द प्रोडक्शन ऑफ मोर इथाइलिन. उसी तरह जिब्रेलिन भी किन्हीं किन्हीं फ्रूट्स में राइपनिंग कराता है इन अ वेरी क्लाइमैक्टरिक फैशन. ऑल्सो इट ब्रेक्स सीड डोरमेंसी. सीड में किसी ना किसी तरह एबीए घुसा होता है. एबीए इज एब्सिसिक एसिड, जो चाहता है कि भाई सीड अभी बाहर बारिश नहीं हुई, अभी जर्मिनेट मत करो. लेकिन बारिश होती है या तो एबीए धुल जाता है, और सर्टेन टाइम्स द डैमेज could also just get rid of the ABA, and the gibberellin का concentration बढ़ जाता है, and the seed gets its clue. Okay, बारिश आ गई, this is the time to germinate, and bingo, there it goes, the seed germinates. सर मुझे और 15 मिनट के बाद जाना पड़ेगा वैक्सीन के लिए.
Swayam, don't worry about this. Go get yourself vaccinated. It's a very good thing. And guys, spread this message to your friends and everyone that you know. Get vaccinated as soon as possible. It's very, very important that you people get vaccinated. So, why if not covered, what will happen? ऋषभ, इथाइलिन गैसियस सब्सटेंस है ना, तो गैस उड़ जाएगा. आजकल देखो, आपने देखो फ्रिज के एडवर्टीजमेंट में यू यू विल फाइंड फ्रेशनेस लॉक टेक्नोलॉजी. क्या है ये फ्रेशनेस लॉक टेक्नोलॉजी? वो इथाइलिन को अब्सॉर्ब कर रहे हैं ताकि आपके वेजिटेबल्स जल्दी खराब ना हो जाए, है ना. द कवरिंग से आपका इथाइलिन का कॉन्सेंट्रेशन बस बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं कर रहे. इथाइलिन ऐसे उड़ के भाग जाता, बट आपने कवर कर दिया ना, अब भाग नहीं पाएगा बेचारा. Also, my hand is paining, so should I heat treated? No, 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 Rishabh, don't do anything like that. Please follow exactly what the nurses have told you. If at all you are getting a symptom which is slightly more than bearable, slightly more than bearable, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, तो approach a doctor or the nurse or the institution where you took the injection. जहां से आपने इंजेक्शन लिया उन्हीं को अप्रोच करो कि देखो ये प्रॉब्लम है, ठीक है. बट डोंट सेल्फ मेडिकेट इन एनी वे. बट इफ कवर्ड ऑल्सो इट कैन रॉट द फ्रूट्स, राइट बेटा, इट डज. बट वही ना, वी ऑलवेज डू अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना, नीड के हिसाब से करते हैं, राइट. हमें अभी भूख लगी है, आम खाना है, तो मम्मी इज लाइक अब तो ये तो खाओ, ये तो सड़ेगा, भूख तो शी इज नॉट गोइंग टू डू, है ना, वैसा वाला सीन. ओके, रॉन्ग पेयर को आइडेंटिफाई करना है बेटा जी. 21 seconds गाइस, 21 seconds. Hydra is wrong, I think. Nidesh, you have to answer there, beta ji. So, but how was the answer Zebralin? Zebralin fruit ripening में आपका हेल्प करता है. मैं इथाइलिन इसलिए बताने लगा क्योंकि वो उससे रिलेटेड था, और मेजर हार्मोन इज इथाइलिन, ठीक है, राइट. इथाइलिन क्योंकि आपका ऑप्शन में नहीं था, यू हैड टू गो टू द नेक्स्ट बिग गाय. नेक्स्ट बिग गाय वाज जिबरेलिन, ठीक है. ओके, क्लियर कट आंसर है हाइड्रा. हाइड्रा मल्टीपल फिजन नहीं करता, ठीक है, तो वो था आपका करेक्ट आंसर. समझा, ठीक है. ओके, नीमो, हाय कैप्टन नीमो. ओके, मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 7, 59 का. वाओ, वी आर डूइंग फास्ट, हाँ. मेल गैमिट्स, सो इज इथाइलिन अकर नेचुरली? हाँ बेटा, इथाइलिन नेचुरली भी अकर होता है, बट आजकल हम भी गैस इथाइलिन बनाना तो आसान है ही. यू कैन इजीली बर्न gases to produce ethylene, and then we can easily make ethylene. It's very easy to make as well, but वो naturally भी occur करता है. It's a gaseous hormone in plants. 25 seeds. Wait, guys, sorry, I have marked it wrong. I have marked it wrong. Yes, I'm going to correct this. I'm going to correct this. Yes, the correct answer is option number 2. I'm going to change it. मैंने क्वेश्चन अधूरा पढ़ा था, मैंने पढ़ लिया था कि एक से कितना पड़ेगा. चलो, सॉरी, माय बैड. The second will form the polar. No. अजीत उल्टा कह दिया. The second one will fertilize the polar nuclei to form the endosperm. आंसर 50 होना चाहिए था. 25 आपका फर्टिलाइज करेगा और बाकी का जो 25 है वो आपका 25 एंडोस्पर्म बनाने में आपकी हेल्प करेगा. तो करेक्ट आंसर शुड हैव बीन 2, दैट इज 50, ठीक है, नॉट 100. ओके, कपीश, क्लियर. मूविंग ऑन. Basic process in reproduction is the creation of a dash copy. रिप्रोडक्शन का बेसिक प्रोसेस क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियो, देन दी एंडोस्पर्म. एब्सोल्युटली करेक्ट. बेसिक प्रोसेस में डीएनए को, सीड्स का सिंगल पार्ट होगा बेटा. सीड जो है आपका, एक तो एग सेल को फॉर्म आपको फर्टिलाइज करना है, एक आपका पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करना है. दैट्स व्हाई. निदेश, मीनिंग ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स बेटा जी, नॉट ऑल प्लांट्स फ्लावर, राइट. सर मेंटी कोड, कृष्णा
कृष्णा, एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन के बाद मिंटी कोड बताता हूँ। Okay, so when you copy the organism, when you're reproducing the organism, you need to copy the DNA, and DNA को copy करना is replication, and that means the correct answer should have been 2, right? Correct answer आपका 2 होना चाहिए. Okay, thank you, अंशिका and ऋषभ, both of you बेटा, वरना मुझे बार बार कॉपी करने में परेशानी होता है. Okay, question number 9 of 59. Wow. Question number 9 of 59. आइडेंटिफाई अ फिश who breathes air through its lungs. अब ये क्वेश्चन इससे ज्यादा आसान नहीं हो सकता. सर इन टाइप्स अदर देन द एंजियोस्पर्म, बेटा यू हैव थैलोफाइटा यानी एल्गे, यू हैव ब्रायोफाइट्स यानी कि hornworts, they are little plants, 15 10 सेंटीमीटर के छोटे छोटे plants. Then you have ferns, the ones that you will find in hill station, Darjeeling and all में बगल बगल. And then ferns also called the rhydophytes. And then you'll find gymnosperms. Gymnosperms are cycas, the one that you'll very frequently find in parks. Okay, so there are 5: Thallophyta, Bryophyta, Rhydophyta, Gymnosperm and Angiosperm. ठीक है ना बेटा, द करेक्ट आंसर वाज लंग फिश. ठीक है, लंग फिश के पास लंग्स होता है जो स्विम ब्लैडर से मॉडिफाई होकर बना है. पहले लोगों को लगता था कि स्विम ब्लैडर, सॉरी लंग्स स्विम ब्लैडर बना है, बट अब लोगों को लगता है शायद स्विम ब्लैडर ही लंग्स बना है. ठीक है, कोड क्या है? अरे अरे तेजस्विनी, दैट्स अ कोड 34091725. ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी. When will NTSE पंजाब come? बेटा पंजाब अभी शायद लिस्ट में नहीं है बेटा मोहित, शायद अभी जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड लिस्ट है उसमें पंजाब अभी नहीं डाला है मैंने. फ्यूचर के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा बेटा. अभी तो 15 तक का ही प्लेलिस्ट है, तो 15 तक में पंजाब नहीं है. ओके, सो स्वयं इज लीडिंग द बोर्ड, देन आई हैव निदेश, देन एक था टाइगर, ओके, विच आई नो इज अजीत. यू ना अजीत इज यू कांट सी. एक था टाइगर कौन है भाई? Then I have Ritika, then Z. Oh, nice, good, goodness. Garima, Samyak, and then we have LOL. Okay, LOL, hi LOL. Then we have Anand. Okay, guys, feel free to have funny names because that will just make the session more funny. I don't mind fun. No, I am that Mahapurush. अच्छा ऋषभ है महापुरुष. ओके, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. आई नो छोटा दिख रहा है बट आपको ऐप पे छोटा नहीं दिखेगा, वहां पे you'll see it. मेंटी पे you'll see it. सर आपका रिप्रोडक्शन पे कोर्स है क्या थ्योरी का? बेटा प्लस पे है, बट वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. आज आई थिंक उसका डाउट सेशन है और हम उधर जेनेटिक स्टार्ट करने वाले हैं अगले लेक्चर में. हालांकि रिप्रोडक्शन आज सुबह हमने यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो. ठीक है सर, आई हैव सॉल्व दिस पेपर ऑफ इमेज. ओ बेटा ये 16-17 का पेपर है, ऑब्वियसली यू पीपल मस्ट हैव. लाइक रेड सस सम्यक, आई लॉस्ट यू. रेड सस मैं समझा नहीं. 4. चलो 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 चलो, सारे सारे करो. एवरीवन हैज टू गिव इट अ ट्राई एंड देन विल डिस्कस कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए था. 15 people are playing the Menti, which is a very good thing, but I would want to more people have 20, 25 would be. Answer is 1. It was once a funny name. अच्छा रेड सस, ओके ठीक है ठीक है, आई रिमेम्बर नाउ. आई फॉरगॉट द रेफरेंस. ओके, अब गाइस देखो सिंपल फंडा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. वी आर टॉकिंग अबाउट F2 यानी कि सेकेंड जनरेशन की बात कर रहे हैं, राइट? दैट मीन्स आपका जो F1 होगा वो क्या होगा? बिग वाई स्मॉल वाई बिग आर स्मॉल आर, राइट? बिग वाई स्मॉल वाई बिग आर स्मॉल आर. अब ये जो F2 पे जाएगा तो 9331 रेशियो लगाना है. 9 हैज टू बी दी बिग गाय, राइट? यानी येलो एंड ब्राउन, राइट? 9 हैज टू बी द बिग गाय, दोनों के दोनों डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. अब मैंने तो मैथ नहीं किया बट इजिली 180 अपॉन 320 इज मोर देन 50%. तो मैं समझ गया कि भाई ये 9th वाला फ्रैक्शन है, 9 वाला रेशियो है. दैट वुड बी येलो एंड राउंड सीड्स. करेक्ट आंसर शुड बी 2. ठीक है, पहला वाला आप लोगों ने क्यों चूज किया ये अभी भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा.
Why did many of you choose the first one? ऐसा क्या था फर्स्ट ऑप्शन में? मतलब इतना अट्रैक्टिव ऑप्शन तो नहीं था. आई एम क्यूरियस. येलो एंड रिंकल्ड बेटा, राउंड डोमिनेंट है ना. जब राउंड डोमिनेंट है तो फिर कैसे, है ना. यू अप्लाइड द सेम लॉजिक. अच्छा, सी, इट वर्क्स. It's more likely for dominant genes to be in majority. Absolutely correct. Chalo. Question number 11. Oh, 23 people are there. Wow. Which gas emits on burning of rice straw? Phenotypic is what we see and genotypic is the genetic composition. Absolutely correct. So I had solved an answer 1 and checked an answer key. It was correct. ना 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 कृष्णा, आंसर की गलत होगा. आंसर की गलत हो सकता है बेटा, मतलब पॉसिबल है, बट आई डोंट थिंक कि इसका आंसर किसी भी तरह से 1 होना चाहिए. चलो. Now which gas emits is emitted on burning of rice straw? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर है सल्फर ऑक्साइड. और इसीलिए जब दिल्ली में दिसंबर के लास्ट महीने में जब बहुत सारा स्मॉग आता है, दैट इज व्हाई पीपल गेट कंसर्न कि वो स्मॉग जो है स्टबल बर्निंग से आता है. ठीक है. आई एम गेसिंग दैट इट शुड बी एन ऑक्साइड. ऑब्वियसली इट शुड ऑलवेज बी एन ऑक्साइड. अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं था, तो हमने सल्फर ऑक्साइड चूज कर लिया, क्योंकि सल्फर जो है आपका प्रोटीन में होता है बेटा जी. राइट. सल्फर आपका प्रोटीन में होता है. कृष्णा बेटा, बिकॉज 180/320, मोर देन 50% वाले के बात हो रहा है ना. आपको याद है 9331, राइट. दैट्स व्हाई पीपल बर्न राइस स्ट्रॉ. बेटा इट्स अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर कॉल्ड स्लैश एंड बर्न. आपने ग्रेन्स निकाल लिए, उसके बाद आप एक प्रैक्टिस थी पुराने जमाने में कि आप उनको जला दिया करते थे. जो बच गया ना स्ट्रॉ, उसको जला देते हैं. इट sort of becomes ash. It will go back into the soil and so called fertilize the soil, right? But ये उतना scientific नहीं है. This is not the best way right now, right? Why not you use it as fodder? बेटा उसके लिए आपके पास उतना fodder होना भी तो चाहिए, है ना, उसके लिए. और उससे आपका यह होता है कि fodder तो यूज कर रहे हो, बट आपका खेत का क्या, right? What about the farmland? What do you do about the fertility of the land, right? तो इसीलिए द बेस्ट प्रैक्टिस इज नॉट एट ऑल द बर्निंग द क्रॉप. आई थिंक जैसा मैंने सुना फ्रॉम द न्यूज, आई थिंक सम गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू सेट अप these factories where they are going to take up these crops and they are produce biofuels and all. but ये large scale में अब करना पड़ेगा, otherwise every year Delhi and northern India will face the same problem, right? Why not make vermicompost? Beta, see, vermicompost or other similar things, it's something that takes preparation. I agree by your idea Samya, but ये इंडस्ट्रियल लेवल पे करना पड़ेगा, राइट. आप ये उम्मीद नहीं कर सकते that the farmers would do it by themselves, because it needs knowledge, it needs little bit of application, है ना. तो आपको ये इंडस्ट्रियल लेवल पे करना पड़ेगा, उसके लिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है ना. बायोमेडिकल वेस्ट अगर नहीं प्रॉपरली हैंडल होगा तो कौन सी डिजीज स्प्रेड कर सकती है. ओके. नाउ ऐसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, बिकॉज इसका मल्टीपल आंसर सही हो सकता है. कैंसर हालांकि इज नॉट स्प्रेड, बट देयर आर वायरसेस विच कैन स्प्रेड द कैंसर. herpes simplex virus is one of them. Papilloma virus is another of them, right? AIDS. AIDS spreads via sexual contact. That is absolutely correct. But needles, what about needles? Right? Needles से भी आपका spread हो सकता है. Heart attack का तो बिल्कुल कोई chance नहीं है. But then comes leprosy, which is Mycobacterium leprae or something, right? So leprosy becomes a major villain here. एड्स भी आंसर हो सकता है, बट एड्स यूजुअली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही स्प्रेड करता है, अनलेस यू आर यूजिंग यूज्ड नीडल्स. और लेप्रोसी जो है वो एयर बॉर्न ड्रॉपलेट से स्प्रेड कर सकता है.
तो अगर बायोमेडिकल वेस्ट है, अगर उसको ओपन है, प्रॉपरली डिस्पोज नहीं करें, खुले में रखा है, तो वो एयरबॉर्न पार्टिकल्स से स्प्रेड करेगा। दैट इज वाई आई चोज ऑप्शन आपका लेप्रोसी। वरना देखा जाए तो कैंसर भी स्प्रेड कर सकता है, आपका एड्स भी स्प्रेड कर सकता है, और लेप्रोसी भी स्प्रेड कर सकता है। राइट बेटा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना, बायोमेडिकल वेस्ट तो लेप्रोसी के केस में भी होगा ना। ओके, एग्जैक्टली ऋषभ, वेरी गुड एग्जाम्पल। देखो ऋषभ का भी आर्ग्यूमेंट बहुत सही है, स्पेशली रेडियोथेरेपी में। नॉट रेडियोथेरेपी में, जब हम रेडियो आइसोटोप्स यूज करते हैं बेटा, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज इन सेवरल केसेस, ठीक है, डायग्नोसिस के चक्कर में। तो उस समय उस आइसोटोप्स को अगर सही से डिस्पोज नहीं किया जाए, तो इवन दे कैन बी कैंसरस, दे कैन बी म्यूटाजेनिक इनफ, राइट। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इनअप्रोप्रिएट था, बट क्या करें, है ना। एग्जैक्टली खुशी, तो दैट इज वाई वी नीड टू इवॉल्व, मतलब थोड़ा, we need to change the way we do things. So do we just go like this with luck in these questions? Beta, no, you have to choose the best option. अब इसमें तो कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं, है ना। सर अभी जाना है बेटा, ओके नो वरीज, टेक अ लीव एंड ऑल द बेस्ट, गेट योरसेल्फ जॉब्ड। ओके, ओके sir, I find bio not interesting. Can I skip it for NTC? No, you can't. There's 13 questions that's coming from biology. Interesting लगे या ना लगे doesn't matter, पढ़ना तो पड़ेगा। Okay, चलो, moving towards the next question, beta G's. Go ahead. Sir, my logic was search for communicable disease and I got it right. Yeah, exactly. Communicable जो भी होगा that would become your answer. But वही है ना कि AIDS भी तो है ना। कैंसर, चलो कैंसर में थोड़ा कम कर सकते हैं कि कुछ ही वायरसेस है, ठीक है, पर एड्स भी तो है। सर टेक माय नेम, बेटा आपका नाम लेने से क्या होगा बताओ। देखो इंटरनेट ने आपको इसकी गलत आदत डलवा दी, क्या हो जाएगा आपका नाम लेने से बताओ, कुछ होगा? नथिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, राइट। सो मेक योर सेल्फ हर्ड बाय योर एक्शंस, नॉट बाय योर नेम्स। He went to pass center. Oh, at the center and the center was off. Oh my god, that's bad. That's not good. Okay, I missed the question. Which category is between gene? अच्छा जीनस और ऑर्डर के बीच में। तो यू नो कफ क्लास ऑर्डर फैमिली, तो ऑर्डर है फैमिली है, उसके बाद तो जीनस स्पीशीज आता है, तो ऑर्डर ऑफ जीनस के बीच में यू हैव फैमिली। तो आपका आंसर हो गया ये। आई एम गोइंग टू सिट इन द मेंटी थ्रोन। यू आर गोइंग टू सिट ऑन द मेंटी थ्रोन, ओके। Guys, do you know prepositions? They're very tricky. So we sit in the chair. We sit on the stairs. So in the chair, on the stairs. Do you know why? What is the logic between in versus on? Earthworm, farmer friend. इससे easy question हो ही नहीं सकता. Dearest Annelida, right? So Annelida, annulus earthworm में भी rings होते हैं, and that's the whole reason of, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा फेस थोड़ा डार्क डार्क आ रहा है, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। वैसे डार्क तो नहीं आ रहा पूरा, बट ठीक है। So correct answer was Annelida. So my keyboard did that, not my grammar. I had written right. No, no, no. Actually, you wrote wrong. In it's देखो, whenever there is a volume, you'll always in. Whenever there is a surface, you're on, right? So you're sitting on the bed. If you're sitting, near the boundary, near the edges, you're sitting on the bed. If you're in your bed, matlab you're sleeping in your bed. So I'm sleeping in my bed, I'm sitting on my bed. On matlab you're sitting on the edge. In matlab you're tucked in quite nicely, so it becomes a volume. So it's very tricky, but one of it's just cool to know, right? In versus on. So जो भी open surfaces है, it is an area, so you are sitting on it. जो भी volumes है, that's in, so you're sitting in it. चलो, question number 15. Enough of English, not required. रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और जिसने ये गलत किया इसका मतलब वो बैठ के समोसे खा रहा है। सर कार में थोड़ा मेंटी खेलूंगा। ठीक है, यू कैन डू इट, एक्चुअली यू कैन डू इट, क्योंकि अभी कुछ पढ़ना तो है नहीं इसमें,
अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, व्हाई इज माई, कम ऑन स्प्लिट स्क्रीन, व्हाट हैपेंड टू माय स्प्लिट स्क्रीन। ओ यूट्यूब, हाँ अलाउ हो तो क्या, ठीक तो है। ओके चलो, raw material required for photosynthesis, we know very well what the answer is, that is carbon dioxide and water, and that's exactly what you need to get. तो ये कौन है जिन्होंने सेकेंड और थर्ड ऑप्शन चूज किया था भाई साहब, मुझे बताना। देखो मुझे यहां से पता चल जाता है कि इन्होंने गलत यूज किया, राइट। सो क्यों भाई, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन भूल गए क्या। चलो मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गो है। So does sleeping in technically mean literally inside the bed, like sleeping in bed in the wood? I know better, but it's like, when you say in the bed, you mean the volume, the bed, the cover, and the pillows and everything. So that is why they say in. Grammatically वो correct है. So I'm sleeping in the bed. अब मतलब थोड़ा weird logic है, weird नहीं है, but ठीक है. This is how it works. So what is this question? Greenhouse gas. Don't blame me. There are questions on disaster management here. Don't blame me. Blame the government. It's not me who did set the paper. Oh, I should not have said that. Sorry, I take it back. सो गाइज महाराष्ट्र में आपका डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ चैप्टर, और उससे क्वेश्चंस आता है, राइट। और उससे क्वेश्चंस को बायोलॉजी कंसिडर कर लेते हैं वो, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो 114 ईयर्स इज द एज जब उतना समय तक N2 आपका रह सकता है, ठीक है। इंग्लिश वेरी वेरी टफ, आई फील यू सम्यक, आई फील यू। माई मिंटी क्लोज, ओ अजीत, बैड लक हाँ। चलो 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 वापस मिंटी खोल लो। सर बीइंग हैग्रिड, आई शुड नॉट हैव सेड दैट, या बीइंग हैग्रिड, आई शुड नॉट, there are many things I would want to say that, but I know I should not have said that. So I'm not saying a lot of things that I should be saying right now. Common exam, I never knew about this, बेटा वो आता है राहुल, depending upon the respective board they will, आई जस्ट गेस बाय मास नंबर नाइट्रोजन फॉर, बेटा उसको गैस नहीं करते, उसको कहते हैं तुक्के लगाना। आनंद, मास नंबर 14 से दैट इज तुक्का, दैट्स नॉट एन इंडिकेटेड गैस। ओके, ऑड मैन आउट, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो बाय द वे हम 17-18 में घुस चुके हैं, 16-17 खत्म हो चुका है, वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड 17-18। मेंटी कोड, अनीश इज लेट आज, बेटा इस क्वेश्चन के बाद दिखाता हूँ, अनीश इस क्वेश्चन के बाद दिखाता हूँ। Okay, okay, okay. I see. Come on, children. Just give me a moment, beta. What is? ठीक है, चलो। क्वेश्चन क्या था वैसे, मुझे याद नहीं। Sir, are organs men? Well, they are not men. Testes is supposed to be find the odd one out, but I guess there was a typing error. तो क्या करें? I forgot to sleep by mistake. Oh my god, that's bad. Acha, sorry. That's the code 34091725. Let me type 3409 किसी ने भेज दिया क्या? वाओ, दैट्स ग्रेट। ओ थैंक यू सो मच। अच्छा नहीं, मैंने भेजा। श्रेया, हाय, लेट, श्रेया, लेट, नॉट गुड। 34091725। Prescribe the limit of sounds in decibels in silent zone during daytime. अब ये मुझे भी तभी पता चला था when I was preparing this menti. बेटा don't blame me, not my fault. मेरा fault नहीं है. Okay, so the correct answer is 50. साइलेंट जोन वो होते हैं जो आपका हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कोर्ट्स के बाहर होता है। द एक्सेप्टेड लेवल इज 50 डेसिबल्स इन केस ऑफ डे टाइम। रात के समय द आंसर इज 40, रात के समय इट रिड्यूसेस टू 40, राइट।
When you made that much sound, when you made that much sound, 50, it's very less. It's murmurs, 50. Not murmur, but slow sounds. ठीक है. तो it's 50 and 40 और मुझे भी ये नहीं पता था. Only when I was preparing, I got to know कि अच्छा ऐसा होता है. ठीक है. Leaderboard. Better leaderboard will come only after three questions. And is this a biology question? Unfortunately, they are marked as biology in Maharashtra. So क्या करें? कुछ नहीं कर सकते. है ना? ऐसा आएगा. Average talking sound is around 50-60. Shouting is 70 to 900. So yeah, it's average talking sound. Means no honk. Basically no honking. Anybody here from Maharashtra? कोई महाराष्ट्र से है यहाँ पे? There's a very curious fact I want to verify. Is there anybody here from Mumbai actually, not Maharashtra, Maharashtra? I want someone. Is there anyone from Mumbai? Or even Maharashtra would work, I guess. बेटा bio section में था. Tejaswari, I heard one thing. I don't know if it's cool. So I heard that to control honking on the traffic lights. So I think Mumbai police did this. I don't know if it's true. I'm just confirming. Huh? So I heard this thing that they have set some decibel meters on the red light. So if people honk, the red light resets it to, like, if the red light was 30 seconds, it would reset it to 30 अगर ज़्यादा honking हुई. Is it true? I mean, is this being practiced in Maharashtra or I heard कि मुंबई में शायद ऐसा हुआ था. I'm not sure. मैंने बहुत बहुत दूर से सुना था कि वो रेड लाइट रीसेट हो जाता है. It's a practice to prevent honking at the red light. Traffic light roasting. Yeah, even I was surprised. Matlab, it's a good initiative. People do honk a lot sometimes on the red light, but I want to be sure. Okay, so nobody is confirming it. Everyone is saying that they have read it somewhere or they have heard it. But any Maharashtra person who can confirm that yes, ऐसा होता है. Okay, ठीक है. चलो, we'll move to the next question. सर लफड़े होने लगेंगे. ओके, ठीक है. यानी नहीं होता, मतलब ये अफवाह है. Okay, चलो next one. Human being blood goes to the heart how many times? Isn't that sort of true? Yes, that would the patient. What if someone is in emergency? But ambulances, they don't have to obey the red lights. Ambulances के लिए red lights नहीं होता. मतलब they never obey. मतलब even आपका बाकी शहरों में भी, for example in Delhi, they don't have to obey red lights. They can simply go anywhere they want. मतलब not anywhere, but I know practically possible नहीं होता है क्योंकि जाम लग जाती है. अच्छा, okay. So guys, this is a very clear-cut question from double circulation. जो right atrium से गया नीचे, मैंने गलत ऑप्शन तो चूज नहीं कर दिया था. रुको, let me verify first. Sir, what if an interview or just an urgent event? Beta, in that case, see, I don't know if that is true. I just heard it. मैंने सुना था. Okay, the correct answer is 2. The blood will pass through the heart twice. पहले right atrium से right ventricle, then right ventricle से through pulmonary arteries all the way to the heart, lungs for oxygenation. फिर आपका आएगा left atrium से left ventricle से aorta के through to the whole body. ठीक है. Sumit, hi beta, good evening. Okay, question number 20. Wow, we need to do it fast, huh? Systemic and then pulmonary. Absolutely perfect. No, but that's a 2 type of circulation, correct? हाँ, ठीक है, चलो, okay. So what are the YT class timings? Rahul, for this week it's 7:30, 3:30 and 8. 7:30 is how do organisms reproduce. 3:30 is NTSE PYQ and 8 o'clock is NEET 2024. ठीक है? Okay. Now, I was confused to answer this question as well because I teach tigmonasty. I don't teach sysmonastic. But that was the only word that came close to tigmonastic. And when I read online कि सच में tigmo को seismonastic भी बोलते हैं, यानी response to vibration. Right? So that is why the correct answer was 4. Sir, किस state का question है? अजीत, टॉपिक का नाम, क्लास का नाम क्या है? बताओ. Just check the class name, NTSE Maharashtra.
ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एनटीएससी स्टेज 1 महाराष्ट्र, तो फिर किस स्टेट का क्वेश्चन होगा? महाराष्ट्र का। जेनेटिक्स विल स्टार्ट इन स्पेशल क्लास, यस इट विल। सर राजस्थान, बेटा राजस्थान अभी स्केड्यूल नहीं है, आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है। Sir, you from which state? But Bihar. I was born and brought up in Bihar. Now I live in Delhi, NCR, not Delhi, but NCR. So tomorrow which state? वैसे तो बेटा ट्रैकर में mentioned होगा. अभी I don't remember. I will go back and look and I can tell you. But अभी I don't remember. Really bad memory. ओके डैश वाले भैया, ओके आई ओके, नो कमेंट्स ऑन दैट। संग्राम नहीं, किसने वो लिखा था? शिवम, ओके। सर यूपी, यूपी का हो क्या? यूपी का कल हुआ था संग्राम, यूपी का ऑलरेडी डन है। वंस अगेन ऑड वन आउट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है बिकॉज रीजेनरेशन इज द ओनली गाय, करेक्ट आंसर विल बी रीजेनरेशन, सॉरी लेट मी। कर्नाटका है शायद, कर्नाटका इज ऑलरेडी इन पाइपलाइन बेटा, कर्नाटका इज ऑलरेडी इन पाइपलाइन। आप उसका मुझे बस दिन याद नहीं है बट वो है। Now the answer would be regeneration because regeneration is not always a mode of reproduction. ठीक है, रीजेनरेशन हमेशा एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया, फ्यूजन हो गया, all of these are modes of reproduction. They will always yield an individual, बच्चा, ठीक है। बट रीजेनरेशन हमारे अंदर भी होता है, you know, something cuts off my skin, the skin regenerates, but that doesn't give me another Sona Singh, right? So that's the reason कि regeneration is an odd one. Sir आपको कुछ याद नहीं होता, it is very hard. Exactly तेजस्विनी, it's very hard to teach diversity. Sir also put West Bengal है, Rishabh, it's already there. Sir, not a full-fledged mode of reproduction. Absolutely no, we can't say full-fledged mode, we say not always a mode of reproduction. ठीक है, okay. सर डाउट नॉट एजुकेशनल। हाँ ऋषभ बताओ। ऋषभ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? सर डराओ मत, पर मैंने कहाँ डराया? व्हाट डिड आई से? मतलब ये तो सिंपल है। सर डू यू, बेटा आई डिड वंस अनीश, एंड नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट बंगाल, आई एम गोइंग सम अदर प्लेस। सर प्लीज ट्राई उत्तराखंड। बेटा वही 15 तक लग चुके हैं, आई विल ट्राई कि और स्टेट्स का मैं बीच में स्पेशल क्लास लगा के कहीं ले आऊं। सैटरडे को आई विल ट्राई। Oh, okay. Rishabh, I think I'm going to Goa if all works out, if they don't cancel the flights and everything. The total number of pairs of chromosomes in human beings are. I think I messed up. Oh, why? What did you do? Oh, the question. Total pairs, come on, 23 pairs, 46 chromosome, easiest question of the century, right? 23 pairs. Thank you so much, Rishabh. Thank you. In winters, that's the fun, right? Going Goa in winters, that's the fun because there is no winter there. It's always sun. Okay, evolution. So evolution की दो theories. So मैंने आपकी इंटीसी क्लास देख रहा हूँ। हर्षित, okay, okay, that would work बेटा। राजस्थान का होगा क्या बेटा? अभी तो नहीं है, but I'll try कनिष्क। ठीक है, ओके। सो डार्विन गेव नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन एंड वॉलेस इन दोनों ने नेचुरल सिलेक्शन दिया था। लमार्क ने बोला था यूज एंड डिसयूज, गर्दन ऊंचा करेंगे जरा तो उनका गर्दन लंबा होगा, द नेक वुड बी लॉन्गर, एंड एक्वायर्ड, क्योंकि उन्होंने एक्वायर किया इस चीज को, वो पास ऑन कर सकते हैं। सो दिस वाज रियली एब्सर्ड that this is not going to happen. So if I become a biology person because I acquired it, I can't pass it down, right? So this is why Lamarck explanation was wrong. But what you're not always taught or you're not always told is कि Lamarck was remarkable for one thing. He was the first mainstream scientist who accepted the graduality of species. इसके पहले तक species को fixed माना जाता था. He was the first one to come out bold and say that no, species do change over time. Okay, wrong poll मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा, ठीक है। तो लमार्क के लिए
ये ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन अफसोस उनका जो एक्सप्लेनेशन गलत था, दैट इज व्हाई ही इज नॉट रिगार्डेड, means world knows him for his mistake, but he actually was very crafty with that. Okay, Darwin 1C, 2 Lamarck, hey, okay, and Mendel in it is okay. Answer is C. Sorry. Answer C है. Answer C है. चलो. So when were you going to visit this year? I'm going 16th. Okay. Question number 24 to, whoa, we haven't even completed half. My God, we need to speed up. Which plant does not belong to thallophyta? Okay, easy. Now it's not easy because I know which does not belong. I know which of these belong, right? तो अगर आपको कुछ questions में आप educated guess कर सकते हो बेटा, right? Sometimes you can get to an educated guess and it works equally beautifully. ठीक है? Come on. It is difficult, no. Eulothrix, Cara, and Spirogyra, all of these are thallophytes. सारे के सारे thallophyta हैं, right? The only one which was not is आपका Funaria, and that is your answer. Species are not fixed means they can evolve. Exactly, बेटा. They can change. But पहले क्या था? पहले people used to think that we are made by God and God made us according to the best fit that we are for a particular environment, right? तो इसलिए which place are you going to visit? बेटा this time I'm going Goa. सर क्लास 9 का क्वेश्चन नहीं है क्या? बेटा इसमें 9th और 10th दोनों का मिक्स्ड है ना? ये तो एनटीएससी है ना बेटा. एनटीएससी में you get 30 to 40% questions from grade 9th and the remaining from grade 10. These questions from NCERT, beta, these are NTSE previous year questions. These are PYQs, previous year questions, NTSE का, Maharashtra का. Rahul, come on. मैं right, special selection and fixed hand in hand. Not special selection. Best fit is not special selection. It's like design, God designed, right? God designed. That's why. Okay. Chalo, 25 out of 59. Excretory product in crystalline form of the plants dash causes itching. I did not know the answer to this question. Guys. So it's important to understand that हमेशा आपको शायद सब कुछ पता नहीं होगा. But whenever you get stuck during the examinations, it's okay. Leave that question, move to the next. है ना? These topics are not there. बेटा इसीलिए देखो NTSC के लिए ना मतलब बेटा आई एम फ्रॉम लाइक महाराष्ट्र में तो ये आपको करना पड़ेगा बिकॉज स्टेट बोर्ड है ना, इसलिए. अनंत यू नीड टू लीव. अच्छा कोई बात नहीं बेटा. These are NTSC papers. You'll have the PPT and you can solve later as well. Okay. Now the answer was raphites. Right, the answer was raphites. They are calcium oxalate crystals. मुझे भी नहीं पता था. So they are calcium oxalate crystals and they are very frequently they cause itchiness. They are generally found in roots. Roots में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ये. ठीक है. So when will you finish this? बेटा वैसे तो 59 क्वेश्चंस है. We'll try to do at least 50. कोशिश करते हैं कम से कम 50 क्वेश्चंस तो हो जाए. अगर नहीं आया तो 450 is the last I can continue. उसके बाद I have another class. So I'm more concerned about SST. You should be बेटा. You should be. 30 questions शायद SST से आता है, right? So you should be. I mean बनता है. ठीक है. So थोड़ा सा work there. And Maharashtra being a very important state in history, so it must have a huge things to remember. Okay. Now, frontal, parietal, occipital, temporal. Temporal is hearing, occipital is the visual cortex. Visual cortex आपका वहीं पे है. तो the correct answer would be third. ठीक है. Sir, in SST my state board and NCERT syllabus is different. बेटा देखो NTSE stage 1 examinations are held by your respective states. So follow your state syllabus.
बट एनसीईआरटी तो बाय डिफॉल्ट करना पड़ जाएगा आपको, क्योंकि मतलब करना पड़ जाएगा बेटा। तो इसलिए फॉलो आप स्टेट का बोर्ड को करो, बट एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेना। ओके। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवरीज सिक्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स। पता है क्वेश्चन गलत है, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, नॉट रॉन्ग बट misappropriated. Is Kritigan here? Kritigan or Lakshika? Are anyone from both of these here? Kritigan or Lakshika? Sir, I thought D was okay. The correct answer is estrogen. But there's a curious thing about this, and that's why I asked Kritigan or Lakshika to be here. So there needs to be tropic hormone. Different. So there needs to be a tropic hormone. मैं समझा नहीं बेटा, मैं समझा नहीं। ऋषभ एक बार थोड़ा दोबारा लिखो। देयर नीड्स टू बी अ ट्रोपिक हार्मोन फॉर देम टू डू इट। हाँ दैट इज ट्रू, एफएसएच एलएच आके ही करेगा। Also, it's closer to the center of auditory and visual cranial nerves. Is that the reason why it is there? Um, I don't think there is a reason. It's how it designed maybe. Nothing concrete, beta. Nothing concrete. It can be progesterone. Ovaries indeed secrete progesterone, but there's a problem here. There's a problem here. The problem is you learn in higher classes inside a follicle. What is a follicle? Absolutely. Inside a follicle. What is a follicle? It's a bag, cell का बना हुआ bag जिसके अंदर the oocyte remains and matures. So inside the follicle there's two types of cells, granulosa cells and theca cells. It is the granulosa cells that give you estrogen, true, but these theca cells they give you androgens. And it's the job of these granulosa cells to get these androgens and convert them into estrogen because they are so similar. And this is done under the influence of LH. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस थोड़ा टिपिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ लेते हैं कि कौन नहीं बनेगा, बट यू हैव टू बी थोड़ा सा केयरफुल कि ये समझ लें कि ऐसा नहीं हो। कॉपस ल्यूटियम फ्रॉम नहीं सेकेंडरी oocyte के काफी आगे देखो, कॉपस ल्यूटियम जो है आपको प्रोजेस्टेरॉन देगा, राइट, बट तब तक oocyte आपका निकल चुका होता है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा बी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू सच जनरलाइजेशंस, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मैसिव होल्स हैं जो इन्होंने मिस किया हुआ होता है। दैट्स ट्रू बेटा, कॉपस ल्यूटियम विल गिव यू प्रोजेस्टेरॉन, दैट्स करेक्ट, एंड दैट विल maintain the entire thing. Okay, so sir, can you repeat the androgen part? I will. So there's a follicle which is a bag of cells, and inside there's a oocyte. Okay, primary or secondary, whatever. Now these oocytes are surrounded by layers of cells. There are two specific group of layers. एक होता है granulosa cell, एक होता है theca, THECA. Granulosa cell वो आपका एस्ट्रोजन बनाते हैं. Theca on the other hand they make androgens, male sex hormones, right? लेकिन granulosa cells convert these male sex hormones androgens into estrogen back. That is why हम ये नहीं कह सकते टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ही नहीं होता, right? Okay, androgen is an isomer of testosterone. Androgen means a group of male sex hormone which includes testosterone, which includes DHEA, something that is dihydroxy DHEA some sterone. Okay, dihydroxy something. It is produced by your adrenal cortex as well, ठीक है। टीका उसके अंदर वाली एक लेयर होती है बेटा, इट्स इन क्लास 12, यस यस यस, ठीक है, उसके अंदर वाली एक लेयर होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, कम ऑन, फाइंड द ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से नहीं आता था, बट आई मैनेज्ड टू कम अप विद द आंसर। So there are two classical examples which I always remember together, and that is Rickettsia markensia. Maybe the reason is that they rhyme, right?
So I always remember Rickettsia Mackenshire together, and they're classical examples of bryophytes, right? So that is why I could figure out ki chalo Rickettsia Mackenshire is not there. That means Rickettsia must be the odd one out here. So sometimes you will build your own tricks, है ना? Sometimes you will build your own tricks, and these tricks are going to help you. आपका इंग्लिश एक्सेंट इतना अच्छा है, आपने कहा बेटा? I guess the reason I am good at English maybe is because of totally because of my school. Uh, so I'm from a very small town in Bihar, but thankfully जो मेरा school था, they were great teachers. They were great teachers, and I mean teachers. You know, not the modern world. You have educators and stuff and stuff and stuff, right? But they were great teachers. They made me who I am. So it's heavily because of them, and also because of a reason that I was like briefly in Google for around just a month, and those people they train you really well. Matlab, they teach you almost everything. Okay, so the answer was Rickettsia, and that gives you the answer. Question number 29, that means half time. By using only one of the two strands of DNA, mRNA is produced. This process is called what? Easy, बहुत easy. So guys, मुझे लग तो नहीं रहा that we'll be able to finish 59 questions or something, but we'll try to finish as much as possible. हम लोग 50 तक तो रह ही सकते हैं सेशन में, so we'll try to finish as much as possible. So please do only 35 questions, beta. Okay, we'll see. We'll see. रुक जाओ, रुक जाओ. Okay, so very clearly you are trying to say that you're using only one strand, and that is transcription using DNA to go into RNA. अब एक चीज मैं बता दूं कि ये मिसकंसेप्शन मत रखना that out of the two strands only one is valuable and the other one is like has got no purpose of life. No, the definition of being the template can change for a particular part of the gene. So ऐसा नहीं है that the all genes would be read from one strand itself for a chromosome. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. Out of the two strands जरूरी नहीं है कि हम एक ही strand से हमेशा सारे genes पढ़ें. Right? So it can vary, and that is why we can't say कि जो दूसरा strand है वो कुछ भी नहीं कर रहा. ठीक है सर जेनेटिक्स इज स्टार्टिंग टुडे यस बेटा इन स्पेशल क्लासेस विल स्टार्ट जेनेटिक्स टुडे we'll cover the basics आज the terms and we'll try to at least do monohybrid cross तो आज करने का कोशिश कर ही लेंगे right. So both are templates? No, not for all genes. So there's one called the coding strand and the non-coding strand. The non-coding strand serves as the template, right? And कोडिंग स्टैंड को कोडिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज द कोड द mRNA का कोड इज सेम एज बिकॉज कॉम्प्लीमेंटारिटी है ना. तो डीएनए का जो भी स्ट्रैंड को आपने पढ़ के mRNA बनाया the code will be similar to the other strand that you did not read. That is why the other strand gets called the coding strand. ठीक है. So there is a coding and there is a non-coding. The non-coding strand is the template क्योंकि आप उसको पढ़ रहे होते हो. कोडिंग स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड नॉन टेम्पलेट होता है राइट. कोडिंग स्टैंड नॉन टेम्पलेट इसलिए उसको कोडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो कोड बना दैट इज सिमिलर टू दी सीक्वेंस इन दी दैट पर्टिकुलर स्ट्रैंड इसलिए. आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द स्पेशल क्लास. कोई बात नहीं बेटा, यू विल ऑलवेज हैव द रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली एंड ओके नो वरीज नो वरीज. बेसिक्स वैसे आपका क्लियर है ना. यू कैन कम इन मे बी सेकेंड और थर्ड क्लास जहाँ पे विल बी डूइंग मोर ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है. Okay, now I need something to drink, but we have class. Okay, identify phase in mitosis shown by, guys, by the way, we have entered 18-19 now. हम 18-19 का पेपर एंटर कर चुके हैं. ठीक है. Centromeres will be split, thereby sister chromatids of each chromosome separates and they are pulled in the opposite direction. I have to study fungi फिर से. मैं भूल गया. And I know it's going to be a very tough one. Sir, demotivated cause I'm going under. Why?
That is how it's supposed to be. कभी ऊपर कभी नीचे. That's how life works. So बेटा दिस इज गोइंग टू बी द एनाफेज, क्योंकि हमने सेपरेशन की बात की, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट द सेपरेशन, राइट? सो दैट्स द रीजन वी आर द करेक्ट आंसर वाज एनाफेज. एनाफेज में सेंट्रोमियर ब्रेक होता है एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स देयर ऑपोजिट एंड्स. सर व्हेन विल यू डू बायोमोलिक्यूल्स? आई हैव टू रिवाइज इट. बेटा बायोमोलिक्यूल्स इफ एंड व्हेन वाला बात है, ठीक है? सर दीज क्वेश्चन सीम सॉर्ट ऑफ मैनेजेबल अप टिल नाउ. Is this the current level as well? See, this is one of the highest level that you will meet. Maharashtra, Bihar, Tamil Nadu and West Bengal sort of are the highest levels जो आपको मिलता है. Maharashtra is around 8 out of 10. ठीक है? तो अगर आपसे ऐसे questions हो रहे हैं then you are in the good spot. ठीक है? Okay, sure. Great बेटा. मेटाफेज इज स्टार्टिंग मूविंग. नो, मेटाफेज में दे अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर. एनाफेज में वो टूट जाते हैं, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. टीलोफेज में दे कंप्लीटली रीच. Okay बेटा, don't worry, we'll have that soon. Okay, so I think Rishabh is on the top, then we have Samyak and there's You Can't See Me. Who is You Can't See Me? Ekta student is Rishabh, right? Who is You Can't See Me? अजीत? नहीं, अजीत नहीं है. There's Ritika, there's Duke. Hi Duke. Swayam, there's Lol. Hi Lol, how are you doing? Nidesh, Budmud and Anant. Okay, great. Okay, 31. Question number 31. Embryonic cells were divided. Okay, there's slight inaccuracy here, but we'll go by it. No worries. There's slight inaccuracy in this question. My throne very soon. Don't worry. We'll see. We'll see ये throne किसके पास रहता है. So Samyak and Rishabh are close contenders for the throne, right? So let's see. Okay. So Siamese twins or conjoined twins are generally formed after 14 days. 14 days के बाद जब splitting होती है तब होता है. But none of the other options made sense. क्योंकि अगर 8 दिन के बाद zygote split कर रहा है तो the individuals, the zygote has already been formed, right? That means a simple thing that there's already a sperm which has fertilized the ovum and the genetic material अब कहीं से नहीं आ रहा, right? तो genetically difference तो होगा ही नहीं. What is Siamese twin? There were these two guys, some Cheng and some. So there were there were two people who were joined together. Partially body joint होती है when Siamese twins बनते हैं. राइट. सो दे आर टू ट्विंस. जब जाइगोट जो है 14 दिनों के बाद स्प्लिट हो रहा होता है तो थोड़ा डेवलपमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होता है. तो दीज गाइस, द पीपल हु आर बोर्न लाइक दिस, दे आर born joined with each other. Sometimes they are joined in the torso, sometimes lower part, but ज्यादातर ऊपर part joint होता है, right? And it's a very tough game to even try to separate, right? So the quality of life is severely deprived. But these are all, Siamese. I am not sure that is what the names were. Siamese. If it is, do let me know. ठीक है बेटा. अजीत पढ़ना तो पड़ेगा बेटा जी. देखो इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप मुझसे पूछते हो ना कि कौन सा बुक पढ़ें, आई ऑलवेज टेल यू तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र. Why do I tell you these three books? Right? The reason I tell you these three books कि if you cover these three books, you're done for NTSE. Stage 1, Stage 2 सबके लिए. अच्छा you're just okay ठीक है. 4 holes उनका सीक्वेंस पूछा गया है. एकदम सिंपल, nothing twisted or turned. Pretty simple. So we have a plus at 5, we have special at 6:45 and we have YouTube at 8. Okay. I think सबसे ये flower का question था. सबसे बाहर you have the sepals collectively called calyx. उसके अंदर you have the petals collectively called corolla.
फिर you have the androecium, collectively called androecium, individually you can call them stamens, and सबसे अंदर में you have pistil, collectively called gynoecium. ठीक है, so that is how you arrange the four holes. Class 6 knowledge, absolutely, absolutely. सुंदरबन सैंक्चुरी, अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको एडुकेटेड गेस के मामले में देना है. They are reserved for which animal? Take an educated guess and your answer would be correct, I promise you. So which one state is toughest for biology? Beta, it could be Maharashtra, Tamil Nadu, Bihar. But देखो, some states are tough but not consistently tough. Tough का मतलब, उसका क्या मतलब है, एक साल अचानक से बहुत टफ आ जाएगा and the remaining years it would be very easy. ऐसा तमिलनाडु के साथ भी है और बिहार के साथ भी है. They are not usually tough. एक बार अचानक से टफ आ जाएगा, right? But महाराष्ट्र में what I found was they are consistently at a good level. मतलब I could rate them 8 out of 10 and they are consistently doing that. Consistently मतलब almost. It fluctuates. Some states fluctuate. Some states always keep a level. So Maharashtra is one of the states जो always हमेशा एक level बना के चलता है. They do not fluctuate a lot. Right. West Bengal it could be very tough. One of the difficult states. एक बार उसका और पता चलेगा. नहीं बेटा, यूपी में ज्यादा टफ नहीं होता. यूपी इज नॉट टफ. नो नो. Who is 10 of 10? बेटा 10 हम किसी को नहीं देते. We don't give 10 to anyone because उसका मतलब लाइक सुपर हार्ड, और फिर आप लोग डरोगे भी मतलब का, तो डरना नहीं होता. पेपर वाले रेड बुल पी के और आते हैं. ओके, एनीवेज क्वेश्चन क्या था ये? या टाइगर टाइगर टाइगर. कर्नाटका इज ऑल्सो कूल बेटा, कर्नाटका का भी टफ आएगा. दीज आर सम स्टेट्स जिनका पेपर आपका टफ आता है. कर्नाटका इज वन ऑफ देम. Okay. So I have my tea, thank goodness. I have something to drink, but if I dare drink right now, ठीक है. क्वेश्चन क्या था, भूल गया. राजस्थान इज कूल एक्सेप्ट फॉर वो नाम वगैरह कुछ कुछ पूछ लेते हैं प्लांट्स के. एक बार तो पूछ लिया था कि इसरो का नाम कब चेंज हुआ था. तो समटाइम्स राजस्थान में वैसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आते हैं. दे विल आस्क यू अबाउट प्लांट्स नेम्स एंड दे विल आस्क यू, मतलब वो क्वेश्चन तो जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं था कि इसरो का नाम कब चेंज हुआ था. ठीक है, मतलब इसरो का नाम इसरो कब पड़ा, उसके पहले उसको कुछ और कहते थे. आई वॉज लाइक कि मुझे क्या पता, बट देन इट्स गुड टू नो, राइट? Okay. From the following animal, sorry, which animal is warm blooded? So does GK come in NTSE? It does, Samyak, it does. I was like कि इसमें भी I have removed 3-4 questions जिसमें पूरा disaster management के questions थे. District level पे disaster management कौन करता है, मुझे क्या पता. Sir, what seriously bio है? So why was, अच्छा, why was that? But I have no clue. देखो क्या होगा ना, ऐसा यू विल फाइंड समथिंग कि सर्टेन टाइम्स रिस्पेक्टिव स्टेट में जो खूबी वाली बात है ना, जो अच्छी वाली बात है, वो तो जरूर पूछते हैं, मतलब थोड़ा सा बनता भी है. तो इसरो का पोखरन एंड एवरीथिंग वो उधर हुआ था, तो दैट इज वाई. ओके, बात करने में आई फॉरगॉट व्हाट द क्वेश्चन वाज. व्हाट वाज द क्वेश्चन बाय द वे? व्हाट वाज द क्वेश्चन? पंजाब इज कूल बेटा, नॉट वेरी हार्ड. इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, नॉट इजी इजी बट ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, सब ठीक है. Okay, so this was about you know mammary gland, and so this was about choosing a mammal basically because mammary gland था, mammary gland choose करते आपका आंसर बैट हो जाता. ठीक है, so nothing complicated about this. This was a fairly simple answer. So which is homothermic? हाँ, homothermic यानी कि warm blooded हो गया, तो warm blooded तो सिर्फ birds और आपके mammals ही हो सकते हैं. Okay. Now, wine of grapes. I had no idea what the answer was. No, इसका आंसर I knew. Sorry, my bad. इसका आंसर I knew, but there are more questions like this जिसमें वो organism पूछ रहे हैं. साइडर में कौन organism है, चॉकलेट में कौन organism है. तो sort of there is a list given in Maharashtra book and you need to remember that. तो इसका आंसर बहुत easy था. Saccharomyces cerevisiae, है ना? Sir, I am traveling. My mentee is fluctuating. कोई बात नहीं बेटा, it's okay. है ना गाइस, इट्स ओके, डोंट वरी. मतलब इट्स मेंटी, जस्ट इंश्योर करना कि क्लासेस के समय कोई फ्लक्चुएशन ना हो, है ना. दिस इज ओके, दिस इज नॉट अ बिग डील. मेंटी है ना, इट्स ओके.
You'll have all these PPTs. You can go through them whenever you want. I'll upload them in the common folder. Chalo. Given below pairs proteins of produced biotechnology disease that are used against. आप देखो कुछ प्रोटीन्स तो कुछ तो बहुत आराम से आप देख सकते हो इंसुलिन एरिथ्रोपोइटिन इंटरल्यूकिन गलती से मैं आंसर बताने वाला था इंटरफेरॉन सो सम ऑफ दीज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ओके बट आपको वही छोटे चीज से समझना है एकदम बहुत छोटा पॉइंट आपको समझाया गया था इंटरफेरॉन के बारे में इंटरफेरॉन आर जनरली यूज्ड फॉर फाइटिंग viruses. Hemophilia is a genetic disorder, right? Hemophilia is a genetic disorder. That means genetic disorder, interferon, no such relation, right, beta? Thank you so much, beta. Right. So the correct answer would be interferons. Okay. Sir, I have a doubt. Ha, beta, please go ahead. Feel free, feel free. Go ahead, go ahead. Type in your doubt. I will answer them. No worries. 37. Shreya and Rishabh, I think you people had a doubt. Shreya, you had something regarding membrane proteins, and I forgot to tell you that as well. And I think, sir, did you teach this? Cause I have not watched the recording. Did I teach what? No, देखो, everything that you find here, I think I have not taught everything. For example, organism that does ferment chocolate. Even I did not know क्या था, right? Not everything that is there in this mentee I have taught you, right? But थोड़ा सा that also needs to change, I guess. Microscope, yes, Shreya. Microscope. When I'm going to show the microscope? Today you won't be there in the special class, right? Okay. Today night, sure. Please remind me today night for sure. Okay. Sir, I thought interferons are secreted by virus infected cells, which other APCs detect and come to. No, no, no. See, interferons they hook onto these viruses or others virus infected cells. Virus infected cells secrete them, not the virus. The infected cells secrete them and they inform the other cells कि भाई देखो ये आया ये आया ये आया ये आया वायरस आया तो फिर उधर से एपीसी आता है और वायरस को खा के वायरस की टोकरी अपने ऊपर लगा लेता है ये देखो वायरस है वायरस है ठीक है ओके दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक क्यों क्योंकि अल्कोहल और स्ट्रेस दोनों है स्ट्रेस इज समथिंग दैट विल हार्म योर इंटायर फिजियोलॉजी पूरी फिजियोलॉजी को हार्म करेगा द प्रॉब्लम इज डायरेक्टली नहीं करेगा ठीक है अल्कोहल डायरेक्टली आपके ब्रेन पे असर करता है या हम आपको बताते हैं कि डो है ना ओके you can't walk in a straight line because cerebellum gets affected and everything तो अल्कोहल डायरेक्टली ब्रेन को अफेक्ट करेगा एंड डायरेक्टली लिवर को हर्ट करेगा बिकॉज योर लिवर वांट्स टू थ्रो द एक्स्ट्रा अल्कोहल आउट कैसे बाय बिकॉज इट डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम लिवर करता है राइट सो इनको डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज अल्कोहल ओवर स्ट्रेस स्ट्रेस भी गलत नहीं है बट डायरेक्ट आंसर्स के लिए वो लिखना था सर माय बायो टीचर ब्रॉट द माइक्रोस्कोप एंड डिडंट अलाउ मी टू सी ओ कोई बात नहीं I'll show you tonight उस दिन तो इंटरनेट फ्लक्चुएट हो गया था आई विल जस्ट राइट नाउ आफ्टर द क्लास आई विल कीप इट हियर एज वेल ताकि मैं भूलूं नहीं बिकॉज आई विल यस यूरिनेशन दैट टू इसीलिए उसका देखो सी I'm not going to give you a poll for this question. I don't know the answer. You people already will find this in Maharashtra book. Disaster level management शायद तहसीलदार करता होगा ठीक है so you'll have to find the answers to these questions there's a disaster management chapter वहीं से आपको करना पड़ेगा बेटा okay guys I think we'll wrap now it's already 50 I'm under problems guys I'm wrapping this now okay it's a mycelium oh nice yeah the problem here is rules otherwise I remember doing lots of stuff with the microscope. Okay. Anyways, guys, we are. खुशी I have class in 10 minutes बेटा I have a plus class in 10 minutes इसीलिए मैं रैप कर रहा हूँ but don't worry अगर रात को नीट के समय हमारे पास समय बचा हम ये रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेंगे और आज रात को अजय सर की क्लास भी नहीं है तो हम रात का क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा खींच सकते हैं ठीक है सर 7th grade 1 sir
अरे 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 सी इसीलिए आई टेल यू नेवर डू बदमाशी विद टीचर्स बिकॉज यू नो you'll miss on opportunities like that. First of all, let me become bada, otherwise I will be in a problem. So let me first become bada. Okay, so I'm becoming bada. Okay, so guys, upcoming batches I have already told you about है ना कि upcoming batches. The code which code beta Krishna we it's over, the minty is over beta. ठीक है. So this premium and golden batch for 10th and 9th grade respectively. ठीक है. We'll be live back on sorry at 8 p.m. Please be there sharp on time. Do remember to subscribe to the course by clicking on the bell icon. Sorry, subscribe to the channel. Bell icon दबाना उससे notifications जरूर दें. And very importantly, like the session. Share this with your friends and don't forget to like the session because that is how we understand that this particular thing is working or not. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइस. आई सी यू पीपल टुमारो, नॉट टुमारो, रात को 8 बजे. तब तक के लिए फटाफट रिमेनिंग क्वेश्चंस विल ट्राई टू फिनिश. कोशिश करते हैं रात को करेंगे नीट के बाद. अगर समय बच जाएगा तो रिमेनिंग क्वेश्चंस कोशिश करेंगे करने का. ठीक है. ओके, चल. थैंक यू सो मच गाइस. टेक केयर. बाय बाय एंड आई विल सी यू पीपल टुनाइट. बाय बाय. टेक केयर.